Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for Mdcat, and today we are going to discuss a little bit introduction to the photosynthetic phases and the photosystems. So let's move on. चलिए अब मूव करते हैं अपने photosynthetic reactions की तरफ. तो जो आपको पता है, the photosynthesis it occurs in two phases of photosynthesis. So there are two phases. The first one is light dependent reactions. अब light dependent reactions में क्या होगा dear students? The solar energy is converted into chemical energy as a result the chemicals with reducing and assimilating power are formed in the form of NADPH and ATP. Clear? Dear students, यहाँ पर important चीज याद रखनी है. Reducing power किसकी है? Reducing power is of NADPH. किस तरह से? It will give its hydrogen during dark reactions. reducing power किसकी? NADPH की. और assimilating power of ATP, मतलब कि in the form of chemical energy. ये chemical energy provide करेगी. chemical energy ATP की और reducing power NADPH की इस्तेमाल होगी. ये important concept है स्टूडेंट्स. assimilating power का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना into 3 carbon sugars and then forward on into 5 कार्बन. वो 3 स्टेप्स होते हैं. आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कैल्विन साइकिल के अंदर, डार्क रिएक्शंस के अंदर. तो वो किसकी एसिमिलेशन किसकी हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की. रिड्यूस किसको किया जा रहा है? वहां पर उस रिएक्शन के दौरान हम देखेंगे कि जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में से जो फॉस्फेट्स को निकाला जाता है तो वहां पर NADPH अपना हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं ताकि वहां पर रिड्यूस किया जा सके उन केमिकल शुगर्स को, 3 कार्बन शुगर्स को. विल से क्लियर. सो ATP अपनी केमिकल एनर्जी की मदद से और जो NADPH है वो अपने हाइड्रोजन की मदद से इस रिएक्शन में हेल्प आउट करेंगी. और इस रिएक्शन की समरी भी यही है कि इस रिएक्शन में सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इनटू केमिकल एनर्जी. और वो केमिकल एनर्जी क्या है? NADPH एंड ATP. और जो सेकंड फेज है
that is called light independent reactions or dark reactions or Calvin cycle or C3 पाथवे। क्लियर, ये सारे इसी के नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो लाइट इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर अब सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, और दूसरा इक्वली ये रात के वक्त भी हो सकते हैं अगर एटीपी और एनएडीपीएच मौजूद होगी तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस वजह से इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें किया क्या जाएगा, द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड to sugars by using the reducing energy of NADPH and chemical energy of ATP. So that is the summary. Now, first of all, coming towards the light reactions, और light reaction को समझने से पहले हमें photosystems को समझना है. So what are photosystems? Photosystem. So photo का मतलब light और system मतलब it must consist of certain parts which will make an organized system. So it is the cluster of photosynthetic pigments, organized at the thylakoid membranes. Clear? Now its components. So here is the photosystem. Components मतलब किससे मिलकर बनता है ये सिस्टम, तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं. Number one is the antenna complex, and number two is the reaction center. Clear? Antenna complex ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी लाइट को कैप्चर करेगा और फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर. हार्वेस्टिंग सिस्टम containing chlorophyll A, B and carotenoids. And the carotenoids. Clear? The accessory photosynthetic pigments. While the reaction center, it will, in this, it consists of one or more chlorophyll A molecules plus primary electron acceptor, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर आगे फॉरवर्ड करेगा टू द नियर बाय
associated electron transport chain, which accepts electrons from chlorophyll A, which is excited, and forwards to nearby electron transport or carrier proteins. Clear? इसके दो टाइप्स फोटोसिस्टम की, टाइप्स of photosystem. So two main types: photosystem 1 having the energy level 700 nanometers and photosystem 2 having 680 nanometer energy level. Clear? Or dear students, here is a short diagram of a photosystem. Here is the chlorophyll A and primary electron acceptor. This is the reaction center. और इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है? The antenna complex. Clear? So this is an example of one photosystem. So ये करेंगे क्या? They will catch the light and pass on to the chlorophyll A reaction center. So this is the antenna complex. This is a reaction center. This is primary electron acceptor and this is chlorophyll A. रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए होगी, ठीक है। और फोटोसिस्टम्स के अंदर ए, बी और कैरोटीनॉइड्स इंक्लूडिंग द कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स हो सकती हैं और होती हैं, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है यहाँ पर, थोड़ा सा देखिएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in photosystem 1 and photosystem 2. photosystem 1 में ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, जबकि photosystem 2 में इट इज फायोफाइटिन प्रोटीन। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर, एंड दीज आर associated to the nearby electron carriers which are also known as the electron transport chain. So this is about the photosystem. So hopefully today's lecture is clear. If there is any question related to today's lecture, you can put your question in the comments box. Our subject specialist will answer you soon. So take care of yourself. Allah Hafiz.